हेलो एवरीवन, इट्स मी दिबांशी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहले हम समझते हैं कि चैप्टर का नाम का मतलब क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एज वी द लिविंग बींग्स इन आवर सराउंडिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, they have their separate working system. As a living being, they have functions in their body that are going on throughout their life process. So there are various organ system that are responsible for effective working, and in a continuous working format they control and coordinate with each other so that a human being or an animal can have a healthy life. So the first topic of a chapter is nervous system. Now before the starting nervous system, let us understand what is a neuron. Neuron is the functional unit of the nervous system. If neurons are not present, then a nervous system cannot exist. And the basic size of a neuron in a human body is from 60 centimeter to 90 centimeter. One neuron may vary differently, but the approximate size of one neuron gets from 60 to 90 centimeters. Now what is the function of neuron? When we there are receptors present in our body. The receptors are especially present in the sense organs of our body. There are various receptors that are present in the sense organs, like the first one, let me talk about skin. The skin has thermoreceptors. When we touch any hot object, so the receptor that is responsible there for conveying the message is thermoreceptor. The second one is eyes, then tongue, and ears. Now tongue has olfactory lobes are present to detect the smell, like what is the smell of any substance, whether it is a sweet smell or it is a bad smell. So the detection of smell is done by olfactory lobes. So receptors play a major role in conveying the message, because the neuron gets a message from the receptor. When the neuron gets the message from the receptor, then it passes through its body. Now the body of a neuron has a dendrite, then it has a cell body. It consists of nucleus and nerve ending. Now let me tell you that a single neuron is not present in a nervous system. Millions of neurons are connected with each other to convey the message from receptors to the brain. Here brain is the major functioning unit that helps us to protect us from anything that is happening around and give response to the things in our surrounding. So the dendrite is like a hair-like structure through which receptors convey the message to the dendrite. After it passes to the nucleus and then it enters the cell body. After the cell body, it passes through the nerve ending. The nerve ending also are hair-like structures that are having branchings and look like roots. Now from this root of one let us suppose here one neuron is present and another neuron is present over here. Now here is the nerve ending and here is the nerve ending. They are connected through nerve endings in each other, and in between here one chemical is present that is known as synapse. Now what is the importance of synapse? So when the data is getting transferred from the dendrite to the nerve ending, here a little bit gap is there. So to make it easy for the information to get transferred from one neuron to another neuron, a chemical is present here, and through when here the electrical impulses get changed into chemical impulses, and then they again get changed into electrical impulses. So synapse is basically the gap between two neurons. So this is how the data gets converted into the electrical impulses, and then it gets transferred into a brain, and the brain gives different commands for responding to the things that are taking place in our surroundings. So this was about neuron, and I have told what are the present in the structure of neuron. Let's move forward into the reflex action and reflex arm. Brain was the main functioning unit over there, but the reflex action has the main functioning unit as the spinal cord. The spinal cord plays a major role over here.
Now why? What is first of all reflex action? What are reflex action? Like अगर हम कोई भी हॉट चीज को छूते हैं तो क्या होता है कि हम इमिडिएटली अपने हाथ को वहां से हटा लेते हैं। तो ये क्या, हम ज्यादा समय नहीं गवाते हैं सोचने के लिए कि हमको हाथ हटाना चाहिए या ना हटाना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता तो वो प्रोसेस कैसे धीरे धीरे जाता और जब तक हमको वापस रिस्पॉन्स मिलता ब्रेन से तब तक हमारा हाथ जल चुका होता। सो दिस इज वाई स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व हियर एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर immediate actions, they are quick actions or spontaneous actions that take place quickly within a second. So let us see what is reflex arc. Now reflex arc is the pathway that is taken by the electrical impulses when reflex action is being taken place. Now let us suppose this is a hot object. Okay, this is the stimulus. Stimulus is the thing that triggers us or makes us to respond to itself, or when we respond to something that is known as the stimulus. Now from the stimulus, receptors are present. Here skin is acting as a receptor because we are touching through the skin, so thermoreceptors are present here. Now from the receptors it goes to the sensory neuron. Then from the receptors it gets transferred into the sensory neuron, and from sensory neuron it gets into the spinal cord. As I told that spinal cord plays a major role in the reflex arc. Then from the spinal cord motor neurons are there through which the data gets transferred, and from the motor neuron it gets into our muscles. Then the response is taken place. Between the sensory neuron and motor neuron, there is a presence of interneuron that links the sensory and the motor neuron. So the data from sensory neuron is transferred to spinal cord, then the spinal transfers into the motor neuron, and this is also known as the effector. So this was the reflex arc where the spinal cord plays a major role. And next topic is division of nervous system. Now nervous system. Nervous system is divided into two topics: central nervous system and peripheral nervous system. Now central nervous system has brain and spinal cord, and the peripheral nervous system has it is present all over the body. There is no specific part for this. So it is present all over the body. Now PNS is again divided into two topics: autonomic, somatic and autonomic. Now here we will learn about two more actions that are taken place, that is voluntary actions and involuntary actions. Voluntary actions take place in the somatic and involuntary actions that take place in autonomic. Now what is the voluntary actions? The actions that are in our control, like we walk, we talk, we slap someone. So these are the voluntary actions that are under our control, but the actions which are not in our control are known as autonomic. They are involuntary actions, means like heartbeat, breathing, inhalation, exhalation. These are the involuntary actions. Now autonomic is again divided into two topics. Now the first one is where the autonomic then is again divided into two topics, where the first one is responsible for preventing us from danger situations, like it prepares our body in danger situations, in fight, and we prepare our body for fight responses. जब भी हम लड़ते हैं ना, तो ये जो ऑटोनॉमिक है ना, वो अपना एक केमिकल रिलीज करता है, या बोल सकते हो कि एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसके कारण हम फाइट रिस्पॉन्सेज देते हैं. और जो ऑटोनॉमिक का जो सेकेंड पार्ट आता है, वो हेल्प करता है हमको काम रहने में, हमको कूल डाउन करता है, और हमको ओवर थिंकिंग करने से प्रिवेंट करता है. ओवर थिंकिंग तो आपको पता ही होगा क्या होता है, आजकल तो सभी करते हैं, तो वो हमको प्रिवेंट करता है ओवर थिंकिंग करने से. तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में तो प्रेजेंट है, लेकिन उनका प्रोटेक्शन कैसे होता है? लाइक सेंट्रल नर्वस में जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं ब्रेन. तो
तो ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमको थिंकिंग करने में हेल्प करता है, जो हमारी बॉडी में जो हमारे सराउंडिंग्स में जितनी चीज़ें हो सकती है हम उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, तो वो सब चीज़ें जो होती है वो ब्रेन के कारण होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी तो ज़रूरी है। तो उसका प्रोटेक्शन कैसे होता है, हमारा ब्रेन जो है वो बोल सकते हैं स्कल जो है उसके आउटर लेयरिंग जो होता है वो एक थिन क्रेनियम का प्रोटेक्शन होता है। तो आउटर मोस्ट लेयरिंग में क्रेनियम प्रेजेंट होता है, और क्रेनियम और इसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये जो फ्लूइड है हमको शॉक से बचाता है। जब भी होता है ना कभी कभी कि घर में इलेक्ट्रिसिटी से करंट लग जाता है, तो ऐसा ना हो कि हमें शॉक लग जाए, उसके लिए ब्रेन में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में फिल्ड होता है। तो ये होता है ब्रेन का प्रोटेक्शन। अब अगर मैं बात करूँ स्पाइनल कॉर्ड का जो मेजर रोल था वो तो हमने देखा कि वो रिफ्लेक्स आर्क में अपना रोल देता है, बट द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कि इट प्रोवाइड्स अ पोस्चर टू अ बॉडी, एंड हम खड़े हो पाते हैं क्योंकि हमारे पीठ में स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसके कारण वो एक पोस्चर प्रोवाइड करता है। और जो उस स्पाइनल कॉर्ड को हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, तो वो जो प्रोटेक्शन होता है उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हमने पढ़ लिया, ये दोनों का प्रोटेक्शन, ये किससे, क्रेनियम से प्रोटेक्टेड है और ये वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड है। ये पोस्चर देने में हेल्प करता है और ये थिंकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ये हमने फंक्शंस भी पढ़ लिए, इंपॉर्टेंस भी पढ़ लिया और उसका प्रोटेक्शन भी पढ़ लिया। नेक्स्ट मैं ह्यूमन ब्रेन, यस सर, एनी क्वेश्चन सर वहाँ स्टार्टिंग में ऑटोनॉमिक पीएनएस पार्ट्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। एनी अदर क्वेश्चन? स्टार्टिंग पे एक चीज करेक्ट करनी है, वहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स कनेक्ट होता है, ना कि दोनों का नर्व एंडिंग कनेक्ट होता है। ओके तो करेक्ट करो। सो एज माय मेट सेड कि पहले न्यूरॉन का डेंड्राइट नर्व एंडिंग सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड होता है। व्हाट इज इंसुलिन? सर इंसुलिन इज द hormone which is released in pancreas, and it helps in maintaining diabetes level and blood pressure and sugar level, and क्या बोलते हैं उसको, glycogen level in the body. How do nerve impulses travel in the body? Sir, nerve impulses first, the neuron from the dendrite receives the electrical impulses, and then it travels into the neuron cell body, and then from cell body it goes to the nerve ending. Which signal will get disrupted in case of spinal cord injury? Sir, electrical impulses. Electrical? Sir, which signal will get disrupted in case of spinal cord injury? Sir, the reflex arc will not take place. Reflex activity. Yes, sir. Basically. What is the need for a system of control and coordination in an organism? Sir, control and coordination plays a major role, because without control and coordination none of the body organs can work easily and effectively to give a outcome. अगर सर ब्रेन ही नहीं प्रेजेंट होगा और वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम ही नहीं करेगा तो हम थिंकिंग प्रोसेस कैसे करेंगे? What is the full form of IAA? Sir, don't know. Which is synthesized at the shoot tip. Auxin. And IAA, auxin का another name होता है ना? पता नहीं. Indole 3 acetic acid. Any question? What will happen if our pancreas stop working? Then the regulation of the blood pressure and glycogen in our body will not take place, and like diabetes takes place, that will not occur, and the human in the circulation of the blood pressure will not take place, and glycogen will not be maintained in the body.